So today we will discuss about some questions on UGC NET 2024 question paper detailed explanation of English literature. So let's see the first question. Identify the ones which are matched correctly. बारबारा मतलब जो करेक्टली मैच है उसको हम लोगों को निकालना है और कौन कौन सा सही है उसको आंसर में बताना है. बारबारा क्रिस्टियन द रेस फॉर थ्योरी, अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबाय ऑन हाइडिंग द हिडन, पॉल कार्टर नेमिंग प्लेस, ग्राहम हगन इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, थॉमस बी मैकॉले मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन. तो आप लोगों को पता है ये तो सही है, थॉमस बी मैकॉले मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन एंड बारबारा क्रिस्टियन द रेस फॉर थ्योरी. दीज टू आर द करेक्ट वन. सो करेक्टली मैच कौन कौन सा है हम लोगों को देखना है, तो हम लोग डिटेल उसका आंसर देखेंगे. तो नेक्स्ट, so Barbara Christian's The Race for Theory was published in 1987 in the academic journal Cultural Critics. तो ये तो सही हो गया. Anne Brown wrote chapters titled on hiding the hidden, writing during the Quit Revolution in the book Anatomy of Gender. तो ये गलत हो गया. Then George R. Stewart naming place. Then Alfred Crossby wrote इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म. इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म तो क्रॉसबाय हो गए, तो ये भी गलत हो गया. तो थॉमस बॉमिंगटन मैकॉले प्रेजेंटेड हिज Minute on Indian education that sought to establish the need to impart English education to Indian natives. तो आप लोगों का कौन कौन सा सही हो गया, तो हम लोग देखेंगे. ये सही हो गया, ये सही हो गया, थॉमस बी मैकॉले and your Barbara Christians. So A and E is the correct one. Next, which of the following given statements are correct? Om Prakash Valmiki's Jatan is a novel. Jatan represents the Dalit Valmiki community in critical light. Jatan enumerates the difficulties of being a Dalit in independent India. Jatan was translated into English by Arun Prabha Das. Jatan critiques the upper caste. No. So here you can have, let's we see which one is the correct first. This one is the correct. Jatan was translated into the Arun Prabha Das. So elimination method से भी हम लोग कर सकते हैं. ये तो अपर कास्ट के लिए बोले ही नहीं, तो ई नहीं ही होगा. ओम प्रकाश वाल्मीकि जूटन इज अ नोवेल. देन नेक्स्ट वन देखेंगे, जूटन रिप्रेजेंट द दलित वाल्मीकि कम्युनिटी इन क्रिटिकल लाइट्स. ये तो सही हो गया. तो बी एंड डी तो हो गया. बी एंड डी जहाँ भी होगा वही आंसर आप लोगों का होगा. तो बी डी देखो, बी डी के साथ ई है, नहीं होगा. तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखते हैं. Jatan, the autobiography of Prakash Valmiki, is the real mirror of Dalit life in the grip of cruel hands of caste system of Hinduism. It is the story of an untouchable in particular and all scavengers in general. The incidents narrated in Jatan are no doubt from the personal life of Valmiki, but they have been happening in the life of many Dalits from the time immemorial. तो जूटन एक ऑटोबायोग्राफी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हुआ था अरुण प्रभा मुखर्जी. सो अरुण प्रभा मुखर्जी, तो ये गलत हो गया, सॉरी मुखर्जी है,
दास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डी नहीं होगा, तो डी जिसमें होगा हम लोग उसको एलिमिनेट करेंगे, तो बी और 2 और 4 तो नहीं होगा। सो क्रिटिक्स दी अपर कास्ट, हाँ अपर कास्ट को क्रिटिक किए हैं, तो कौन कौन सा हो गया आपका देखते हैं। ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ई सी, ई और सी जहाँ पे होगा ई और सी, तो ये 4th वन इज योर करेक्ट वन, 4th वन इज योर करेक्ट। सो और क्या है सी डी ई, सी में क्या है Newton enumerates the difficulties of being a Dalit in independent India. Okay, the next one. So here you can get the proper explanation. What does deductive method of reasoning refers to? ये तो बहुत ही easy है. So deductive reasoning, also known as deductive logic or top-down logic, is a logical process where a conclusion is drawn from general statements or premises that are assumed to be true. It moves from general ideas to specific. So general idea to specific, general to particular. Understand? This one is the correct one. So deductive, कैसे हम लोग उसको याद करेंगे, GDP, तो डिडक्टिव मेथड जनरल टू पार्टिकुलर. अंडरस्टैंड? GDP you can memorize in this way. Identify these statements which are correct. कौन कौन सा करेक्ट है उसको हम लोग अभी देखते हैं. So first, the term Henuer is often associated with the poetry of Baudelaire. देखते हैं सही है कि नहीं है. ये सही है आई थिंक. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. The term Henuer is not a standard term in English or French literature or sociology. It is likely a misspelling of Flaneur, which is the term strongly associated with the poetry of Charles Baudelaire. So first one is the correct one. This one is the correct one. Next देखते हैं habitus. The term habitus is most closely associated again Baudelaire. So second is also correct. First one correct, second one correct. The next one Michael Foucault, modernity and unfinished project. देखते हैं modernity unfinished project associated with जॉर्जन हैबरमास. तो ये क्या हो गया, गलत हो गया. सी इज़ द रॉन्ग वन. सी इज़ द ये बॉडेलियर. Which of the following is not an autobiography? So you have these options. So Long Walk to Freedom, this is a autobiography of Nelson Mandela. My Experiments with Truth, you know that this is very familiar one. Akarmasi, this is again the outcast, it is Saran Kumar Limbe. So we will see the details of it. Patrick White, A Life is a biography written by David Marr. तो ये बायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी नहीं है. देन नेक्स्ट योर मतलब पैट्रिक वाइट जो लाइफ है वो बायोग्राफी है और रिटन बाय डेविड मार. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी. व्हाट योर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994. Then your Experiment with the Truth, you know that Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. And your Akarmasi is the autobiography of Saran Kumar Limbe. So your answer is which one? Your answer the first one. Then next,
Next one, the line, thou still unravaged bright of quietness. So this is presents which of the following rhetorical figure. कौन सा rhetorical figure यहाँ पे यूज हुआ है? ये तो बहुत इजी है. So next one is, so your answer is a phrase, thou still unravaged bright of quietness. This is from John Keats' Ode on Grecian on and employs the rhetorical device of apostrophe. Next one, the again chronological order. तो एंटी एड में ये तो फेवरेट टॉपिक है, chronological order. और ये जो बुक्स दिया गया है उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. तो लेट्स सी, डिटेल्स हम लोग देख लेंगे, फिर आंसर को आएंगे, ऑप्शंस को आएंगे. सो नेशन एंड नरेशन, दिस इज 1990 बुक रिटन बाय होमी के भाभा. डायलॉजिक इमेजिनेशन 1981 MM बागथिन. देन एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियल एनकाउंटर, दिस इज 1973. Discourse on Colonialism is an essay by M. Caesar 1950. Orientalism 1978 Edward Said. So कौन सा पहले होगा? Let's see that. तो जैसे कि हम लोगों का है फर्स्ट, कौन सा है ये? वो फर्स्ट डिस्कोर्स ऑन कोलोनियलिज्म. नेक्स्ट हुआ एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियल एनकाउंटर. नेक्स्ट ओरिएंटलिज्म. देन योर डायलॉजिक इमेजिज्म एंड लास्ट वन नेशन एंड नरेशन. अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे यू कैन डू दैट. Which of the following works of R.K. Narayan were published after independence? Independence के बाद कौन कौन सा हुआ है? So obviously the guide is, you know, and your financial export. So C and E. Third one. Your third one is the correct one. Then next, R.K. Narayan's works published after India's independence, like your after 1947, The Financial Expert 1952, Waiting for Mahatma 1955, The Guide 1958. So हम लोग के ऑप्शन में तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड द गाइड है, तो ये दोनों का हम लोग चूज करेंगे. देन चाइल्डहुड ऑफ जेसस, इसको कॉलम मैच भी बहुत ज़्यादा आता है एंड बहुत ईजिली यू कैन डू इट. एक दो के अगर हम लोग मैच कर लेंगे तो हो जाता है. सो चाइल्डहुड जेसस बाय JM कॉटजी, गो बिटवीन LP हार्टले, ब्राइट सेड रिविजिटेड, लाइक योर व्हाट, इविल लाइन वर्क एंड कैशर राय, दिस इज द JD सेलिंगर. Who among the following is credited with the ending the system of patronage with his letter to Lord Chatfield? This is your, which one is the answer here? You can guess. Samuel Johnson. So यहाँ पे details you can find. What is patronage system I have given it, and which one is the answer. Also you can get the clear answer here. You can get Samuel Johnson. Thank you. So I think this will helpful for you. These questions are. So if you like my questions and if really helpful these questions for you, then please like, share and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.